Good morning students, welcome back our online session of class 9 maths. In the previous class of chapter number 2, we discussing about the polynomial, how we can find the factor of the polynomial, how can we divide the polynomial, and how we can find the value of the polynomial. That should be a factor of x plus 1 or x minus 1, and that different form of polynomial that we discussing in the previous classes. Now we are discussing about the today new topic about the factorization, which is already studied into standard 8, that is based on to the factorization things, different type of identities which we have to use and we have to factorize or maybe expand the given terms. So in your textbook chapter number 2, we'll practice today on the exercise 2.5. This is the last exercise for the chapter number 2, which is based on to the factorization. So in 8th standard we studied about the different kind of the identities in which we have to use as a part of the expansion or factorization. For example, different type of identities of formula. For example, x plus a into x plus b. These are the two terms are there. If like x plus a into x plus b. So how we can be formation of expansion of this term? That is x square plus in one bracket a plus b into x plus a into b. That is generally expansion. Or maybe the terms like given x plus y whole square, or maybe x minus y whole square, or maybe x square minus y square, or maybe x cube plus y cube, x cube minus y cube, x plus y whole cube, x minus y whole cube, and x plus y plus z whole square. Okay, this is the sixth one, 7, 8, 9. So also we are discussing like another formula. 10th one is what? A cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Now these are the general identities. These are the general identities, and using these identities we have to find the factorization. Okay, we have to generally find the factorization of the given numbers using these identities. So how we can find the numbers? So if the number is in a form of, you have to convert in a form of factorization, then using these identities you just use as a part of factorization or expansion. Okay, so let us start from that topic, how we can find the factorization using these identities. How we can find the factorization? Simple, how we can find the factorization. So next topic we are discussing in which we have to use the factorization method. So use suitable identities and find the following properties. Okay, so using identities find the following. Okay, using the suitable identities find the following, in which I'll give you the different type of examples of the identities like x plus a into x plus b, x plus a whole square, or x minus a whole square, or x square minus y square, etc. So let me start from the example. One is x plus 4 into x plus 10, x plus 4 into x plus 10. So in the previous terms of identities, which identity we have to use? Like x plus a into x plus b, x plus a into x plus b. This identity we have to be used. So in position of x there is the same terms, that is called x square plus in bracket 4 plus 10 into x plus 4 into 10. Which identity did I use here? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सी identity हमने यूज किया है? x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. a वाले जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का यूज मैंने यहाँ पे किया है x के पोजीशन पे. x is as it is, पोजीशन ऑफ a there is a 4, पोजीशन ऑफ b there is a 10. So इस फॉर्मूला के अंदर जहाँ पे a और b दिखेगा वहाँ पे 4 और 10 लिखेंगे, x की पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे. So therefore answer will be x square plus 10 plus 4 into x, 14x plus 10 4s are 40, right? Then what is the answer is
एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ना अभी दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, उसको माइनस के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। वन इज x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज फॉलो करेंगे, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। दैट फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a और b के पोर्शन पे 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस another bracket 8 into minus 10, a into b, that is 8 into minus 10. So therefore x square plus 8 minus 10 minus 2x plus into minus minus 10 it's 80. So x square minus 2x minus 80. So that is the second formation of the terms. How can we find the third form? That using that formula we can change the formula, that is the same formula is there. So I'll use another formula, third identity I'll use the third identity for what? Y square plus 3 by 2 and y square minus 3 by 2. Third is what? Y square plus 3 by 2 and y square minus 3 by 2. So it is a factor of a square minus b square. It is a factor of what? A square minus b square. कौन सी identity use करेंगे? I will write here. Which identity we have to use? A square minus b square equal to a minus b and a plus b. This identity we have to applied in this factorization form, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेम है, मिडल टर्म प्लस इंटू माइनस और लास्ट टर्म सेम है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम हो, दोनों किसी का स्क्वायर हो और बीच में साइन प्लस और माइनस किया, देन यू कैन बी फाइंड इन अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 3 by 2 और वाई स्क्वायर माइनस 3 by 2, इसको अगर मुझे एक्सपांड करना है देन आई हैव टू यूज हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए की पोजीशन पे क्या है? वाई स्क्वायर, बी के पोजीशन पे क्या है? 3 by 2। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो y रेज टू 4 माइनस 9 by 4, y रेज टू 4 माइनस 9 by 4। तो ऐसे हम जनरल टर्म्स में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू उसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं। 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट। 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 इसी फॉर्मूला के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ वी कैन बी सॉल्व हियर? फर्स्ट टर्म बोथ आर सेम, सो 3x स्क्वायर प्लस a इंटू b, दैट इज 4 इंटू माइनस 5 इंटू फर्स्ट टर्म इज 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, राइट। So 3x square is 9x square plus 4 into minus 5 into 3x minus 1 into 3x minus 3x minus 20. 4 into minus 5 is what? Minus 20. So answer is what? 9x square minus 3x minus 20. So by using this type of identity, you can convert the number in a simple form of factorization. Now, if the value is in a form of numerical values, now number is given like 100 into 103, 95 into 97. So how can we determine the value of this number? How can we determine? For example, we have to be formation like evolute. We have to using the evolutions. How can we evolute? So evolute के लिए भी यही सब identity का use हमें करना है. We have to also use this identity as a part of the evolution. So next is evolute. Evolute, ठीक है? So evolute में हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 100 into 3 into 107, 103 into 107. By using that kind of the identity, we have to find out the numbers. 103 that will return like 100 into 3 into 100 into 7. 107 that is what? 100 into 7. Now there's two numbers, that is a x plus a, x plus b. अभी जो आगे आइडेंटिटी हमने लिखा था, instead of 100 that is a x plus instead of 3 that is a 100 is a x plus 7 is a b, right? So x plus a into x plus b, by using that identity we can be find this number
So therefore 100 square plus 3 plus 7 into 100 plus 3 into 7, right? जो फॉर्मूला है x square plus in bracket a plus b into x plus a into b, in that formula we have applied all these numbers. Now 100 square is what? 10,000. 100 square is what? 10,000 plus 3 plus 7, 10 into 100,000 plus 7 3s are 21. 10,000 plus 1,000 plus 21, that is 11,021. So by the suitable identity we can find this number. Simple as it is. Now another I'll use the example for the identity like 104 into 96. 104 into 96. How can we find 104? That will be written like 100 plus 4 and 96 is what? 100 minus 4, that is 96. So a plus b, a minus b, both the terms are same. 100 plus 4 and 100 minus 4, a and b, this is a and this is b, this is a and this is b, both the terms a and b are same. बट साइन जो है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है, तो कौन सा फैक्टराइजेशन यूज करते हैं वहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो देयरफॉर ए की पोजीशन पे 100, देन 100 स्क्वायर माइनस बी की पोजीशन पे 4, तो 4 स्क्वायर. 100 का स्क्वायर होगा 10,000 माइनस 4 स्क्वायर इज व्हाट? 16. इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9984. आंसर क्या मिलेगा आपको? 9984. तो बाय यूजिंग दिस यू कैन फाइंड द evolutions or maybe using the suitable identity you can find the value. ठीक है, अभी हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन, जिसमें अलग अलग वैल्यूज का हमें यूज करके सॉल्व करना होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द फैक्टराइजेशन. हाउ वी कैन फाइंड द फैक्टराइजेशन, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द फैक्टराइजेशन. सो फर्स्ट फैक्टराइज. देखो ये सारे टॉपिक्स, दिस ऑल द टॉपिक्स दैट वी डिस्कसिंग इनटू द प्रीवियस क्लासेस, 9x स्क्वायर 6y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, चलिए. When we are in the 8th standard, then there is a certain rules to find out the factorization. There is a certain rules to find out the factorization, in which first we have to check how many terms are there. It should be a 3 terms, 4 terms, 6 terms, or maybe there is a terms which should be a 9 terms. ऐसे अलग अलग terms होंगे. तो अगर हमें फैक्टराइज करना है तो which formula that we have to apply, वो कैसे हमें पता चलता है कि कौन से फॉर्मूला में हमें क्यूब अप्लाई करना है, कौन से फॉर्मूला में हमें होल स्क्वायर अप्लाई करना है, किसमें हमें होल क्यूब अप्लाई करना है, किसमें हमें 3 टर्म्स वाला क्यूब अप्लाई करना है. व्हेन वी नो सो दैट ऑल दिस टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, which formula that we have to apply, that is generally based on to the question. कौन सा क्वेश्चन किस तरह का है, उस क्वेश्चन से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन टू द क्वेश्चन. सो बेस्ड ऑन टू द क्वेश्चन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि विच फैक्टराइजेशन वी हैव टू बी एडॉप्टेड. तो फैक्टराइजेशन के लिए जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास 3 टर्म्स दिए हैं. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 एंड 3 टर्म्स. 3 टर्म्स दिए हैं. तो 3 टर्म्स अगर दिया हो तो आपको कुछ सर्टेन रूल्स ध्यान रखने हैं. 3 टर्म्स में अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पॉजिटिव टर्म है, देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, लास्ट टर्म भी पॉजिटिव है. तो अगर 3 टर्म्स वाले फैक्टराइजेशन में अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पॉजिटिव है और उसके साथ साथ इफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो वहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, y स्क्वायर भी है, तो इसको कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? सो लाइक दिस 9x स्क्वायर दैट इज रिटन लाइक 3x स्क्वायर. 9x स्क्वायर रिटन लाइक 3x स्क्वायर प्लस फिर लास्ट टर्म लिखो दैट इज y स्क्वायर. लास्ट टर्म इज व्हाट? y होल स्क्वायर. सो फर्स्ट टर्म and last term that is a positive and convert it into the perfect square. Now middle term that always we multiply with the 2 into first term into last term, 3x into y. See that all the terms are balanced. 3x square is a 9x square, 2 3s are 6, x into y 6xy plus y square. Then what the answer is? Answer will be first term will be 3x, yeah, plus ki sign, then we will apply plus, last term is y, then 3x plus y whole square.
So the factorization of 9x square plus 6xy plus y square, that will be 3x plus y whole square. Now similarly, I'll use another example for the factorization. X square minus y square by 100. Now here is only two terms. It is the only two terms, x square minus y square by 100. So here is only two terms and both term having a square and middle term will be minus. Then we have to apply a square minus b square. If both term having a square of any number and middle term is the negative, then we have to apply a square minus b square. So how can we write x whole square minus y by 10 whole square, right? X square minus y by 10 whole square, it should be written like x minus y by 10 in another bracket x plus y by 10. By using this formula you can use the factorization for examples. Now another example for that, 4y square minus 4y plus 1. 4y square minus 4y plus 1. So see that it is the first term and last term will be positive and both term having the perfect square. So right here 2y square, middle term minus then minus, last term 1 whole square, middle term will be 2 into first term into last term, 2y into 1, then answer will be first term 2y, then middle term minus, last term 1 whole square. So 2y minus 1 whole square. So by using this type of factorization we can easily convert in a form of factors. तो ऐसे हम उसके फैक्टराइजेशन कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. अभी दूसरा हम यूज करते हैं एक्सपेंशन मेथड, जिसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस एक्सपेंशन मेथड का हम यूज करेंगे. चलिए, वो भी फार्मूला आपको पता है, दैट ऑल्सो यू हैव टू स्टडीड इनटू द क्लास 8. Expansion formula that we have to apply. How we can we find the expansion formulas? So next topic, that is about the expansion. That is about the expansion. Expand. Now in expansion, there is a three terms are given. For example, x plus 2y plus 4z whole square. ऐसा का एग्जाम्पल लूँगा मैं आपके लिए. x plus 2y plus 4z whole square. ऐसा एक टर्म दिया है हमें. x plus 2y plus 4z का होल स्क्वायर. नाउ अभी ऐसे टर्म्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3. थ्री टर्म्स है. अबे तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर है, तीनों टर्म के पास होल स्क्वायर है. देन व्हाट वी हैव टू अप्लाई, विच फार्मूला वी हैव टू अप्लाई? आई विल राइट हियर द आइडेंटिटी हियर. इफ यू नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc plus 2ca. By using this identity, we have to be expand this number. देखो, स्मॉलर फॉर्म से लार्जर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपांसन, और लार्जर फॉर्म में से स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. तो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फैक्टराइजेशन, और इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया और लार्जर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्सपांसन. तो कैसे पता चलेगा ये टर्म है? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि 6 टर्म होने चाहिए और मिनिमम 3 टर्म का स्क्वायर मिलना चाहिए. 6 टर्म्स होने चाहिए और मिनिमम 3 टर्म का स्क्वायर होगा तो वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा. चलिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, देन x स्क्वायर प्लस, ठीक है. सेकेंड टर्म आपके पास क्या है? 2y है, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर. थर्ड टर्म क्या है? 4z, देन 4z स्क्वायर प्लस, that is a square b square c square plus 2ab. ab it means what? x into 2y plus bc 2 into 2y into 4z and 2 into ca 2 into 4z into x. All the terms that should be written, x square plus 2y square plus 4z square plus 2 into x into 2y plus 2 into 2y into 4z plus 2 into 4z into x. Enter all the terms that should be represented. So how can we write here? X square plus 2y square, that is 4y square, 4z square, that is 16z square, plus 2 to the 4xy plus 2 to the 4 4 the 16yz and 2 4 the 8xz.
So that is the general expansion. When we expand x plus 2y plus 4z, answer will be x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy plus 16yz plus 8xz. So by using this formula you can be convert in the simple forms of expansion. But this is only the positive. अगर नेगेटिव टर्म हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर द नेगेटिव टर्म के लिए क्वेश्चन लेता हूँ. नेगेटिव टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे. 3a minus 7b minus c whole square. We have to use the negative sign here. तो नेगेटिव साइन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसका एक एग्जांपल डिस्कशन करते हैं यहाँ पे. फॉर हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो फर्स्ट मैं सारे साइंस जो ऑल द साइंस दैट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव फर्स्ट, देन वी हैव टू वेरीफाई कि विच टर्म वी हैव टू टेकन एज अ नेगेटिव. सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? a b c. So 3a square first term, then plus second term 7b square plus third term c square plus 2 into first term into second term 3a into 7b plus 2 into second term into third term 7b into c plus 2 into third term into first term c into 3a. Right? Now 3a square is a 9a square. Now once again, still here is the minus sign. How can we convert the minus? See that अभी यहाँ पे which term we have to taken as a negative. तो अभी इसका आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कंसीडर करना पड़ेगा, कौन से टर्म्स को आपको नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन करना है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो a का टर्म हमारे पास पॉजिटिव है और b और c का टर्म हमारे पास नेगेटिव है. a इज व्हाट? a इज अ पॉजिटिव टर्म और b और c आपके पास क्या है? नेगेटिव टर्म है. तो जहाँ पे b और c दिखेगा वहाँ पे अभी हम नेगेटिव अप्लाई कर देंगे. सो यहाँ नेगेटिव साइन, हियर इज अ नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव. राइट? वेयर इज द b एंड c? c वहाँ पे नेगेटिव की साइन अप्लाई कर दी है. सो 3a स्क्वायर इज व्हाट? 9a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस बिकॉज हियर इज द साइन इज नेगेटिव. 7 3 21 2 42 ab प्लस इंटू माइनस प्लस 2 7 14bc प्लस इंटू माइनस माइनस 6ac. सो आंसर इज व्हाट? 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac. तो ऐसे हम जनरली उसको एक्सपांड कर सकते हैं. इज द सिंपल फॉर्म द एक्सपांसन. तो ये तो एक फॉर्म हो गया आपका पॉजिटिव नंबर का और एक नेगेटिव नंबर का. एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारा रेशनल नंबर है, उसको कैसे हमें सॉल्व करना है बाय द यूजिंग ऑफ रेशनल नंबर. उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं यहाँ पे. तो रेशनल नंबर का अगर हमें इंप्लीमेंटेशन करना है देन हाउ कैन वी सॉल्व द रेशनल नंबर्स? सो यहाँ पे रेशनल नंबर का फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो 3 अलग अलग नंबर्स मुझे यूज़ करने पड़ेंगे. सो एक नंबर लेता हूँ 1/4a, 1/4a. एक नंबर लेता हूँ -1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर. चलो इसको एक्सपांड करते हैं हम बाय यूजिंग द एक्सपांसन. इस नंबर का यूज़ करते हैं. तो पहले तो इसको सिंपल रेशनल फॉर्म में लिख देते हैं. a/4 माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर. तो दैट इज a, b एंड c होल स्क्वायर. तो एक ही पोजीशन पे a/4 है तो a/4 का होल स्क्वायर प्लस b की पोजीशन पे -b/2 है तो -b/2 का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास है a/4 इंटू सेकेंड टर्म है मेरे पास -b/2 प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म है मेरे पास -b/2 इंटू थर्ड टर्म है मेरे पास 1 प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? a/4. राइट? सारे नंबर्स आपने इंडिविजुअली लिख दे यहाँ पे. अभी इसका आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन के फॉर्म से एक्सपांसन करना है. देन हाउ कैन वी एक्सपांड? 2 और 2 तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे. ये भी 2 और 2 एलिमिनेट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 2 4. राइट? देन हाउ कैन वी राइट हियर? a स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1. ओके, नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस ab/4. 4 is still remaining. Now here is plus into minus minus b 1 b. So only write b. Now plus a/2. So what is the expansion? Expansion is a square by 16 plus b square by 4 plus 1 minus ab/4 minus b plus a/2. तो ऐसे जनरल टर्म्स में हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं.
तो ओनली वी टुडे डिस्कसिंग अबाउट द सम आइडेंटिटीज, उसको कैसे एक्सपांड और फैक्टराइज करते लेट। अभी और भी है बहुत सारे के आइडेंटिटीज जिसमें क्यूब, होल क्यूब और बहुत सारे नंबर्स आएंगे। वन बाय वन हम सारे फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन का यूज करेंगे, बट टुडे वी डिस्कसिंग ओनली व्हाट अबाउट द आइडेंटिटीज और उसको कैसे फैक्टराइज करना है। व्हेन वी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर we more discuss about the other identities, how it can be converted into the expansion and factorization. Till only practice this type of question from the textbook and other source material, and later on we discussing about the other identities. Till bye.